Hello dear students, greetings for the day. I am Dr. Kandarp, an assistant professor at JG College of Commerce. I welcome you all in my today's session of surplus capital method of piecemeal distribution of a cash. I already prepared my video regarding maximum loss method of piecemeal distribution where I explained the concept of piecemeal distribution of a cash. You must remember that the chapter piecemeal distribution of a cash carries 25% weightage in Gujarat University. The piecemeal distribution of a cash is a chapter that is in the subject given Financial Accounting 1 offered by the Gujarat University for BCom semester 1. So you all first year BCom students are welcome again in my session. Let's quickly revise the concept piecemeal distribution of a cash without going further in detail. I already mentioned in my last video that at the time of dissolution of the firm, partners are used to sold out their assets and collects the money to pay off the liabilities by preparing the realization account. But assets are not realized in a day or two. एक दो दिन में assets बेचना मुमकिन नहीं है. Of course, the firm can sell, but then firm will get less amount by the assets, and firm will also pay the less amount to their partner. So ultimately, the partners will not get anything in their own hand. So partners always try to sell the assets with good amount. That takes a week or a month or maybe years. This means assets are sold out gradually and cash is also distributed among the partners gradually. This method is known as piecemeal distribution of a cash. The piecemeal distribution of a cash is to be done in order laid down by the law. Law के हिसाब से हमें distribution करना पड़ेगा. The law said that first you have to pay dissolution expense, then you have to pay outside liability, then partners loan, and lastly partners capital. Now let us come our today's topic, surplus capital method. According to the surplus capital method, first the distribution of cash is to be done on the basis of surplus capital. While distribution of the cash, whatever the money comes by realizing the assets, you must have to pay the outside liabilities and the partner's loan. That I already mentioned you in my last video. Whether the surplus capital method or maximum loss method, you must have to pay the first three order, that is dissolution expense, outside liabilities whether secured or unsecured, and then partner's loan. The method will only start after the partner's capital is only remaining. So surplus capital method is also start while distribution of the partner's capital. Under this method, cash is first to paid to a partners, those who have surplus capital as compared to others. मतलब कि जिस partners ने ज्यादा capital दिया हुआ है as compared to other partners. लेकिन सिर्फ capital is not the factor. We must have to consider profit sharing ratio also. So surplus capital is to be found out on the basis of capital factor. Capital factor is the factor which consider both the aspects, that is capital also as well as profit sharing ratio also. इससे होता यह है कि कोई भी पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के साथ ये नहीं बोल सकता कि मुझे कैपिटल के हिसाब से पैसा दो, या फिर कोई ये बोलेगा कि नहीं मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसा दो. कैपिटल फैक्टर सॉल्व दिस इश्यू and consider both the factor capital ratio as well as profit sharing ratio. Let us quickly look towards the steps to be followed. Step number 1, we have to find out capital factor. The formula to find out the capital factor is actual net capital divided by profit sharing ratio. Actual net capital is to be found out by adding the reserves and by subtracting the profits into the capital. अगर किसी सम के अंदर कैपिटल से भी ज्यादा जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट दिया हुआ है, generally profit are not that because we are on the chapter of dissolution of the firm, and the dissolution decision is only to be taken when the firm is going in the losses. So mostly the losses are given in the balance sheet.
So loss must be subtracted out of the capital and general reserve must be added towards the capital. Whatever we will get is called a net capital, or we can say actual capital, right? Now, in the second step, we have to prepare a statement showing surplus capital. In the surplus capital, we have to first mention whatever found in the first step, net capital or actual capital. Then take a base as per the assigned rank. In the first point, we have to assign a rank as per the least capital factor. Least capital factor के हिसाब से हमें रैंक देना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में. लीस्ट कैपिटल फैक्टर के हिसाब से रैंक देने का पर्पज ये है कि वी हैव टू फाउंड आउट हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स हु हैव सरप्लस कैपिटल. जिस पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल आएगा उसे कितने पैसे कब मिलेंगे, हाउ मच मनी he will get and when he will get. These two questions, how much and when, इन दोनों questions के आंसर के लिए we are preparing this statement number 2, step number 2, statement showing surplus capital, right? So capital में से as per the assigned rank, as per the assigned rank, as per the assigned rank, कैपिटल में से जो भी असाइंड रैंक होगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, एज पर द लीस्ट कैपिटल फैक्टर, फर्स्ट वी विल टेक अ बेस ऑफ that partner's capital and distribute the cash proportionately to other partners. Then it is known as surplus capital by deducting the second point out of the first point. मतलब कि कैपिटल में से अगर हम असाइंड रैंक वाला प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करेंगे देन वी विल गेट सरप्लस कैपिटल. दिस स्टेप इज टू बी फॉलोड फॉर द असाइंड रैंक. अगर 2 रैंक है तो 2 बार प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, 3 रैंक है तो 3 बार प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. सो दिस स्टेप इज टू बी फॉलोड अगेन एंड अगेन टिल द अमाउंट इज टू बी डन लेफ्ट ओवर 0 फॉर ऑल 3 पार्टनर्स. तीनों पार्टनर्स के लिए जब 0 अमाउंट बच जाएगा तब तक ये स्टेप्स हमें फॉलो करते जाना है. इसका सीधा कनेक्शन है स्टेप नंबर 1 के साथ. अगर स्टेप नंबर 1 में हमने 1 2 3 करके रैंक दिए हुए हैं, 3 पार्टनर्स है, 3 रैंक हुए, तो यहाँ पे 3 बार प्रोपोर्शनेट हमें करना पड़ेगा. अगर 2 ही रैंक है तो 2 बार प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. And then we will move to our actual answer, that is statement showing piecemeal distribution of a cash, but in order laid down by the law. पहले हमें outside liabilities, resolution expense and partners capital पे कर देना पड़ेगा. Then and then only we consider step number 1 and step number 2 to distribute the cash amongst the partners for their contributed capital. I hope you understand these steps. मैंने मैक्सिमम लॉस मेथड में आपको बोला था कि देर आर नो स्टेप्स, बट इन दिस मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड, देर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर, then you have to make a statement showing surplus capital to find out when and how much money will received by the partners, and the third, our actual answer, statement showing piecemeal distribution of cash, right? Let's learn the Gujarat University sum today for the surplus capital method. In Gujarat University there are 2 sums asked for the piecemeal distribution in or about surplus capital method as well as for maximum loss method. This is the sum is for surplus capital method. In this sum there are 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. The firm is going to dissolve and on that date the balance sheet is given. There are 3 partners P and K, for their capital is 68,000, 32,000 and 4,000. Here the general reserve is also given. I already told you in the steps that if general reserve is there we have to add it in the step number 1. So in this sum we must have to add general reserve in the capital to find out the actual capital, right? And then P's loan is also given and M's loan are also there. P ने और M ने firm को loan दी होगी, so that is our liability, and creditors are also there. On the asset side, land and building stock, debtors and cash available is also there. Other information हमें दी है. There are 5 installments are given. 5 installment में assets realization के पैसे आए हुए हैं.
44,000, 42,000, 64,000, 42,400 and 18,000. And we have been asked to prepare the piecemeal distribution of a cash according to surplus capital method. In this sum, we have to prepare the columns. How many liabilities and how many partners are there? On that basis, we have to prepare the column to solve the sum. यहाँ पे हमें 3 liabilities दी है, P's loan, M's loan and creditors, and 3 partner है. So we have to prepare 6 column for the surplus capital method and 1 particular column. So total 7 columns we must have to prepare to solve the sum. Okay, so let's get solved the sum in the board. I hope you are ready with the sum, or you can take a screenshot of the sum from my earlier slide. This is the sum of surplus capital method asked in the Gujarat University 2019 question paper. So let's start to solve the sum. In surplus capital method, I already told you that there are 3 steps. Step number 1, 2 and 3. We must have to follow the steps, but you must have to remember that while doing the statement of piecemeal distribution of a cash, you must have to pay all the liabilities first, and surplus capital method calculation will only start after the partners will have to be paid. So let's start our sum with the step number 1. The step number 1 is finding out the capital factor. Capital factor. Capital factor considers both the aspect, capital as well as profit sharing ratio. So we must have to write a capital of all the partners first. The capital given in the sum is 68,000, 32,000 and 4,000. Right? 4,000. Now, I already told you that we must have to find out a net capital if the reserves and profit and loss account is given in the sum. In our sum, you will find reserve is given in the liability side. Reserve is a part of capital. So that is why we must have to add general reserve to capital. General reserve is given in the sum, that is distributed among the partners in the ratio. The partners ratio is 3:2:1. So the general reserve amount is distributed amongst the partner in their ratio 3:2:1. Right? It will get 12,000 for third share, 8,000 for second, and 4,000 rupees for one share. So 12,000 plus 8,000 plus 4,000, that is 24,000. After adding the general reserve, we get 80,000 rupees, 40,000 rupees and 8,000 rupees. This is called net capital, as no profit or loss is given in the sum, just only general reserve is there. If loss is given in the sum, we must have to deduct out of the capital. But here only general reserve is given, that's why we are adding only general reserve, and this is known as net capital, or you can say actual capital. Now, whatever the remaining calculations have been made during the sum is to be made on the basis of net capital and not the capital, right? Now, partners are liable to receive 80,000 rupees, 40,000 and 8,000. That means net capital. Now, step number 1, capital factor. The formula of capital factor is net capital divided by profit sharing ratio, right? We will get capital factor. Our profit sharing ratio is 3:2:1, right? So 80,000 is divided by 3, 40,000 is divided by 2 and 8,000 is divided by 1. We will get capital factor of 26,000
80,000 divided by 3, 26,667. Odd amount, 40,000 divided by 2, that means 20,000 rupees. And 8,000 divided by 1, that is 8,000. कैपिटल फैक्टर फाइंड करने का पर्पस यहाँ पे ये है कि firm will consider both the aspect, capital ratio as well as profit sharing ratio. Now, capital factor, step number 1, only gives us the informations which whose partner has a surplus capital. किस partners का surplus capital है? Here, P has surplus capital than M and K. P has 26,667 as per the profit sharing ratio. सबका अगर एक पार्ट मैं करूं तो अकॉर्डिंग टू अ इक्वल पार्ट, एक के हिसाब से K का 8,000 है, इसका एक के हिसाब से, दो के हिसाब से 40,000 है तो एक के हिसाब से 20,000 आएगा, और इसका तीन के हिसाब से 80,000 है तो एक के हिसाब से 26,000 आएगा. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P हैज अ सरप्लस कैपिटल. तो P को सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, राइट? यू ऑल आर एग्री विथ मी. और K हैज लीस्ट कैपिटल फैक्टर, सो K को सबसे कम या फिर सबसे बाद में पैसा मिलना चाहिए. लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि P को मैं कब पैसा दूं और कितना पैसा दूं. ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि P को मैं 80,000 रुपीज, जो भी मेरे पास पैसा आएगा या फिर मेरे पास पैसा पड़ा होगा, उसमें से P को मैं पहले 80,000 रुपीज दे दूं, फिर बाद में 40,000 रुपीज M को दूं और फिर बाद में K को 8,000 रुपीज दूं. अगर हम लोग ऐसा करेंगे, 80,000 रुपीज P को दे देंगे और बाद में M और K को देंगे, तो फिर M और K फर्म के साथ झगड़ा करेंगे या फिर P के साथ झगड़ा करेंगे. दैट मीन्स वी मस्ट हैव टू पे प्रोपोर्शनेटली टू ऑल ऑफ देम. अब प्रोपोर्शनेटली सरप्लस कैपिटल फाइंड करने के लिए वी मस्ट हैव टू यूज स्टेप नंबर 2. फॉर स्टेप नंबर 2 वी हैव टू गिव रैंक. वी हैव टू गिव रैंक टू देम एज पर देयर लीस्ट कैपिटल फैक्टर. एज पर लीस्ट कैपिटल फैक्टर मतलब कि हम लोग जो कैलकुलेशंस है वो अपोजिट कैलकुलेशन करेंगे, उल्टा कैलकुलेशन करेंगे. जिसका सबसे कम है कैपिटल फैक्टर उसे मैं रैंक पहला दूंगा, उसके बाद उससे जो ज्यादा है उसे मैं रैंक दूसरा दूंगा, और P जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसका सबसे ज्यादा सरप्लस है, उसे मैं रैंक 3 दूंगा. रैंक अपोजिट देने का ये मतलब नहीं है P will get at the last. No, K will get at the last because K has contributed less amount. राइट? सो यहाँ पे हमने रैंक इसलिए दिया है ताकि मैं P को सबसे पहले कितना पैसा देना है वो मैं कैलकुलेट कर सकूं. वो जो कैलकुलेशन है स्टेप नंबर 2 का वो अपोजिट होता है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड. दैट इज व्हाई रैंक जो है वो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड दिया जाता है. रैंक नंबर 1, 2 एंड 3. This is clear to everyone? Step number 1, according to step number 1, you will get the information that P must get first, and then M, and then lastly K, right? So this is a step number 1. Let's make step number 2. Okay, our step number 2 is surplus capital. Statement of surplus capital. स्टेप नंबर 1 के हिसाब से जिस पार्टनर का सरप्लस कैपिटल था उसे पहले कितने पैसे देने हैं वो फाइंड करने के लिए वी आर मेकिंग स्टेप नंबर 2, राइट? नाउ I already told you in the step number 1 that whatever calculations from now onwards we will going to make is on the basis of net capital and not the capital. So according to step number 1 we have already found out a net capital. So first we are going to write over here net capital is 80,000 rupees, 40,000 rupees for M, and 8,000 rupees of K, right? Now, according to step number 2, we must have to look towards the rank. Rank के हिसाब से first rank is given to A, K को हमने पहला रैंक दिया था, तो K का पहले हम लोग बेस लेंगे. सो बेस
we are taking of K's capital for distributing the cash. K's capital, K को अगर बेस लेना है देन K को सबसे पहले मुझे 0 करना पड़ेगा, राइट? K को अगर 0 करना है तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस M और P को प्रोपोर्शनेटली पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. द कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द P एंड M proportionately as per the profit sharing ratio. So here, listen to me carefully. We are distributing the K first because the K has first rank in the step number 1. So we are distributing the K first. We are taking K's capital as a base and make a 0. Why it is 0? Because we are assuming that K will get 8,000 rupees out of that 8,000 contribution. So this is 0. Now, if K will get 8,000 rupees as per their 1 profit sharing ratio, then as per the 2 profit sharing ratio, 2 share. As per the 2 share, you can make a cross multiplication. Cross multiplication आप लोग कर सकते हो कि 1 के हिसाब से K को 8,000 मिला है तो 2 के हिसाब से M को कितना मिलेगा. So 2 के हिसाब से M must will get 16,000 rupees. और उसी तरह से P will get share as per his profit sharing ratio, that is 3. तो 3 के हिसाब से P को कितना मिलेगा? 1 के हिसाब से अगर 8,000 है, 2 के हिसाब से अगर 16,000 है, तो 3 के हिसाब से P को कैश मिलना चाहिए 24,000 रुपीज, राइट? इसको ध्यान से समझ गए आप. हमने पहले रैंक के हिसाब से बेस लिया है K का. सो K's कैपिटल इज अ बेस. तो K को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि K को हमने 8,000 में से 8,000 दे दिया, सो इट विल गेट अ 0 अमाउंट. नाउ K को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है. M को वी आर एज्यूमिंग दैट K को अगर 8,000 रुपीज दिया है अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयर 1, तो 1 के हिसाब से 8,000, तो 2 के हिसाब से कितना, और P को 3 के हिसाब से कितना. सो दिस विल मेक 24,000, 16,000 एंड 8,000. नाउ द अमाउंट रिमेन्स is 56,000 for P. M के लिए 40,000 minus 16,000, that is 24,000 rupees. And ये तो 0 हो गया है already. Now, as per the step number 1, now it is time to take a base of second rank. Second rank किसका था? As per the step number 1. M's capital, right? M का सेकेंड रैंक था, so we are taking a base of M's capital. अगर M को मैं बेस ले रहा हूं, so M को सारा का सारा अमाउंट मैं दे दूंगा 24,000. So now M has get full amount. K को तो पहले से मैंने पैसा दे दिया है, so पहले से 0 है. Now बचा है P, right? तो इसमें वापस कैलकुलेशन करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कि M को अगर मैं 24,000 दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बेस M लिया है, सेकंड रैंक M का था, तो 2 के हिसाब से क्या करना है आपको? 2 के हिसाब से 24,000. सो 3 के हिसाब से कितना? 3 के हिसाब से कितना? सो 3 के हिसाब से आएगा 36,000 रुपीज, राइट? 36,000 rupees. Okay, let's use another pen. 36,000 rupees, right? Now P remains 20,000. M already 0 हो गया क्योंकि M का बेस लिया था, and K का पहले से 0 है. Now P as the only remaining partner. So lastly, third rank is given to P. So P's capital is a base and P will get 20,000 rupees, and ultimately all the partners have been paid, right? But remember the points which I told you. हम लोग calculations कर रहे हैं the partners who has surplus capital. पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैंने बोला था कि P हैज अ सरप्लस कैपिटल, सो P मस्ट हैव टू रिसीव मोर अमाउंट्स देन M एंड K, और
फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट इंस्टेंस में हमें P को पहले पैसे देने पड़ेंगे. सो दिस कैलकुलेशन इज मेड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. हमें क्या करना है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है. दैट मीन्स फर्स्ट P will receive 20,000 rupees in first phase. Then in second phase, P will receive 36,000, 24,000. In the third phase, P will get 24,000, M will get 16,000, and K will get 8,000. Right? So these are the steps. In the first phase, from downward to upward, we have to go from downward to upward. ये कैलकुलेशंस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सबसे पहले P, M और K को इतना इतना पैसा दे देना है. You know that in the step number 1, we have concluded that K has contributed less amount and P has contributed more surplus amount. That's why P got 20,000 in the first instant, and then in the second phase, P and M will get this much amount, and lastly, P, M and K will get in their ratio 24,000, 16,000 and 8,000, means 3:2:1. ये जो अमाउंट है वो 3:2:1 के हिसाब से ही है. ये भी जो अमाउंट है वो 3:2 के हिसाब से ही है. So we can distribute the amount in their ratio, but in this instance, in this order. हमें नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर को मेंटेन करना है और पहले P को पैसा देना है, बाद में P और M को, एंड लास्टली PMK को इसके हिसाब से पैसा देना है. सो सरप्लस कैपिटल स्टेप नंबर 2 गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 क्वेश्चन, हाउ मच एंड व्हेन. किसको कब पैसा देना है, PMK में से किसको कब पैसा देना है. तो स्टेप नंबर 2 गिव्स अस द इंफॉर्मेशंस दैट P विल गेट फर्स्ट, then P and M will get second phase, and lastly to PMK. Okay. Now let us make our original answer. Let us make the calculation for our original answer. Original answer is step number 3. In the step number 3, what is the step number 3? Statement of piecemeal distribution of a cash. हमारा जो आंसर है वो वही है, स्टेप नंबर 3 है. ये तो खाली कैलकुलेशंस था टू डिस्ट्रीब्यूट P, M and K. पार्टनर्स को कितना पैसा कब देना है उसके लिए हमने एक वर्किंग नोट जैसा कैलकुलेशंस किया हुआ है. आवर ओरिजिनल आंसर इज स्टेप नंबर 3. सो लेट्स मेक इट. ओके, सो आई एम रेडी विथ माय स्टेटमेंट ऑफ piecemeal distribution, that is step number 3, and I must tell you why I have made 6 column, right? Because we must have to pay to liabilities first in order laid down by the law that we already discussed in our earlier slide. First, we must have to pay the creditors, that is the second sequence. Dissolution expense is the first sequence. Then partner's loan, P has given loan and M has given the loan. And lastly, the partner's capital is to be paid. So let us make the payment to the liabilities first out of the cash received, or we have, if any, cash. As per the sum given on the asset side, cash balance is given, right? So cash balance in the asset side is given 16,000 rupees. So before realizing the assets, I have the cash. So this cash of rupees 16,000, I must have to pay to creditors, as creditor has first right to get the amount, as creditors is the outside liability. So I must have to pay to the creditors first. So 80,000 minus 16,000, that means 64,000 is yet to be paid to the creditors. Now we must have to wait for the realization of our assets. So let's take the first installment. In the sum, first installment we have received of rupees 44,000, right? This is a 44,000 and we have to pay to the creditors at first instance. So this 44,000 rupees must be paid to creditors, right? So creditors will remain 20,000.
That means we yet to be paid to the creditors this 20,000 rupees. That means we have to wait for the second installment too to pay to the creditors. So let's take the second installment. As per the second installment, we have received 42,000 rupees. So out of the 42,000 rupees, creditors has right to take their amount first. So we must have to pay to the creditors first. The balance left over in our hand is 22,000 after paying 20,000 rupees to creditors. That means creditor amount, the liability of the creditors is paid successfully. And the balance of cash left over with our hand is 22,000 rupees. Now, after paying the outside liability, in the third order, we have to pay P's loan and M's loan. Now, P and M both are the partners and both have given the loan to the firm. So, both have equal rights to get their amount back. Equal rights, that means they must have to pay to the ratio of their liability. यहाँ पे liability जो है वो P और M का है 24,000 and 16,000. So we must have to pay 24:16 in the ratio of 24:16. That means 3:2. Right? ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. 24,000:16,000 is our ratio. So whatever the balance left over with our hand is to be paid to P's loan and M's loans in the ratio of 3:2. So 22,000 rupees is distributed to P and M in their liability ratio, not the profit sharing ratio, right? इस सम में बाई चांस ऐसा हो रहा है कि their profit sharing ratio is also 3:2, right? The ratio is 3:2:1, but P and M has ratio 3 and 2, and by chance P's loan and M's loan is also 3:2. So don't take this ratio, liability ratio हमें लेना है. So 3:2 में हम this 20,000 rupees डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So 20,000 rupees का अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो we will get 13,200 rupees. 13,200 rupees. यहाँ पे मैं फिर से 24,000 कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ बिकॉज अब तक हमने उन्हें कुछ अमाउंट नहीं दिया था. आउट ऑफ दिस 24,000, P's loan is to be paid 13,200 and M's loan is to be paid 8,800. So the balance left over after they receive 13,200 and 8,800 is 10,800 and 7,200 rupees. Okay, now my second installment is to be distributed amongst the P's loan and M's loan. Now we have to wait for the third installment. As per the questions, third installment we have received by realizing the assets is 64,000, right? Out of this 64,000, we first have to pay 10,800 and 7,200 to P's loan and M's loan. तो पहले P loan और M loan को पे कर देते हैं 10,800 and 7,200 to both of them. Creditors को तो पहले से जीरो कर दिया है हमने, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया. That means all the liabilities have paid. 10,800 plus 7,200 is equal to 18,000 rupees. So out of the 64,000, 18,000 rupees is used to pay P's loan and M's loan. So the amount remains with our hand is 46,000 rupees, right? 46,000 rupees. Now, cash available with our hand is 46,000 rupees. All the liabilities are paid. Now we have to pay to partners capital. Partners has contributed their net capital 80,000, 40,000 and 8,000. Now remember the points I told you that as and when the partners capital will remain, surplus capital method will start. So now we must have to look towards the step number 2 to distribute the
पार्टनर्स कैश। अगर पार्टनर्स को पैसा देना है पी, एम और के को, तो स्टेप नंबर 2 हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 2 फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट, राइट? सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स। नाउ we have available cash 46,000 and we just have to pay to the partners 80,000, 40,000 and 8,000, right? So let us look to the step number 2. According to the step number 2, we must have to take P's base first because P has a surplus capital according to the capital factor. So P को हमें पहले पैसा देना है। In the first phase, second step में हमने लिखा हुआ है we must have to pay to the P 20,000 rupees, right? So 20,000 rupees is paid to the P in first phase. So 60,000 balance left over. M will get nothing because M's capital contribution is less than P. K has the least capital factor, so K will get last. So 40,000 and 8,000 will remain. Now out of the 46,000 I used 20,000, so the balance of cash left over with me is 26,000, right? Now in the second phase we have to pay to P and M, right? P और M को हमें कितना पैसा देना है? P और M को हमने पैसा देना है 36,000 and 24,000 in the second phase. But I don't have 36,000 and 24,000 rupees with my hand. I just have 26,000 rupees left over with me from this installment, third installment, right? So I can distribute 26,000 rupees only to P and M. So let's distribute the 26,000 in their ratio 3:2. 26,000 is distributed to P and M. P M को मैं क्यों दे रहा हूँ? सेकेंड स्टेप में हमने जो कैलकुलेशंस किया था, सेकेंड स्टेप के सेकेंड फेज में हमने कैलकुलेशंस किया था कि P और M को पैसा देना है सेकेंड फेज में। सो P और M को मैं सेकेंड फेज के लिए पैसा दे रहा हूँ, लेकिन उनको पैसा देना है टोटल मिला के 60,000 रुपीज, बट आई डोंट हैव 60,000 रुपीज, आई हैव ओनली 26,000 रुपीज। सो आई एम गिविंग 26,000 रुपीज राइट नाउ, एंड देन आफ्टर वट एवर बैलेंस लेफ्ट ओवर 60 में से अगर मैं 26,000 रुपीज दे देता हूं तो 34,000 रुपीज मैं बाद में, मतलब कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट जब आएगा तब पे करूंगा, राइट? सो 26,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग P एंड M इन देयर रेशियो 3:2। 3:2 के हिसाब से अगर मैं उनको पैसा दूं तो कैलकुलेशंस बनता है मेरा 15,600 एंड 10,400 रुपीज, राइट? K को अभी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेकंड फेज है। Now the balance left over for P is 44,400. 40,000 minus 10,400, that means 29,600 and 8,000 as it is, क्योंकि K को हम लोग अभी कोई पैसा नहीं दे रहे। Now we must have to use fourth installment as my third installment is over. According to the sum, the fourth installment is received 42,400 rupees, right? That is given in the sum. Out of this 42,400, I must have to complete my second phase. Second phase में जो 60,000 मुझे पे करना था, लेकिन मैंने 26,000 ही दिया था, तो I must have to complete my second phase, that is 60,000 to P and M. तो P और M को मुझे कैसे भी करके 60,000 रुपीज सेकेंड फेज में देना है। 26,000 मैंने पहले दे दिया, तो अब मुझे कितना देना बाकी बचेगा आउट ऑफ द 60,000? 34,000 रुपीज। सो 34,000 रुपीज सेकेंड फेज का जो पैसा बाकी था वो मैं पहले P और M को दे रहा हूं इन देयर रेशियो 3:2। तो 3:2 के हिसाब से कितना बनता है? 20,400 एंड 13,600, राइट? अभी भी K को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि सेकेंड फेज ही मेरा कंटिन्यू है। K को सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा एट द थर्ड फेज। सो द बैलेंस लेफ्ट ओवर 24,000, यहाँ पे 29 माइनस 13,000, दैट मीन्स 18,000, नो 16,000
and 8,000, राइट। और मेरे पास कैश अवेलेबल है 42,000 माइनस 34,000 इज 8,400 रुपीज ओनली। अब तो बहुत सिंपल है। नाउ ऑल द पार्टनर्स गॉट बैलेंस लेफ्ट ओवर एज पर देयर रेशियो 3:2:1। ये 24:16:8 करोगे तो 3:2:1 ही आएगा। So whatever amount will realize by the assets will distribute among the three partners in their profit sharing ratio, because we are in the third phase, that means last phase in the step number 2। step number 2 के हिसाब से लास्ट फेज के हिसाब से अब हमें तीनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसे देते जाना है, राइट। सो 8,400 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द ऑल पार्टनर्स इन देयर रेशियो 3:2:1, बराबर। 3:2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा 4,200, 2,800 एंड 1,400 रुपीज, राइट। माइनस करते हैं 24,000 माइनस 4,200, दैट इज 19,800। 16,000 माइनस 200, 2,800 इज 13,200 and 8,000 minus 1,400, that is 6,600 amount yet to be paid to PM and K. Now in this sum, fifth installment is also realized by the assets। पांचवा इंस्टॉलमेंट भी सम के अंदर लिखा हुआ है, that is 18,000 रुपीज, राइट। 18,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। अब 18,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट को सिंपल सा है P और M K को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि वी आर इन द थर्ड फेज, लास्ट फेज में जब भी होते हैं तब तीनों पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। सो दैट्स व्हाई दिस 18,000 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग all three partners in their ratio 3:2:1। So it will get 9,000, 6,000 and 3,000 rupees। So the balance left over is 10,800, 7,200 and 3,600 rupees, right? Now after fifth installment no installment will come as per the sum के हिसाब से सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट दिए थे, अब कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है। और सम के अंदर ये भी बोला है कि एज्यूम दैट ऑल द एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड, मतलब इसके बाद कोई पैसे आने वाले नहीं है। इसका मतलब ये बनेगा कि PMK को इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अभी कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर ये लोग इतना लॉस बेयर करेंगे तो इस लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस, दैट इज आवर एक्चुअल आंसर। यही हमारा आंसर है, रियलाइजेशन लॉस will bear by the partners PMK, the 10,800, 7,200 and 3,600। That's it। सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, वी मस्ट हैव टू पेड द लायबिलिटीज फर्स्ट। द मेथड विल स्टार्ट ओनली व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज लेफ्ट ओवर टू बी पेड, राइट। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप आई कैन मेक यू द पॉइंट्स क्लियर टू यू। I hope you understood the piecemeal distribution concepts as well, and the surplus capital methods concept as well. So if you have any doubts, you can comment in my video. You can find my video on our YouTube channel JGCC_academics. Thank you very much for joining me throughout the sessions. We will surely meet in the next sessions. Thank you very much.